नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 18th लेसन इकोसिस्टम्स 8th साइंस महाराष्ट्र बोर्ड। इस लेसन में हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम्स की। और एंड दिस इज़ द 18th लेसन ऑफ साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। व्हाट इज़ द इकोसिस्टम? ओके, कि इकोसिस्टम क्या है और उसमें किस किस तरह की इकोसिस्टम्स आती है। So this ecosystem it refers to biotic and abiotic factors, okay, which are present on the earth. कि जो भी बायोटिक फैक्टर्स है, अबायोटिक फैक्टर्स है, एंड दिस कम्बाइनली गिव्स इकोसिस्टम। और इन सारी चीज़ों से जो बनती है इकोसिस्टम, ओके। तो बायोटिक फैक्टर्स, यू नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, these are the biotic factors. And non-living things means water is there, soil is there, different type of minerals are there, okay. So these all are the proteins and then carbohydrates, fats, lipids. ये सारी के सारी जो भी चीज़ें, जो भी whatever the things which are present on the earth, these all are the abiotic factors. And the biotic and abiotic factors are correlated with each other, okay, in the various ways, okay. So directly or indirectly they are depends on each other, okay. So biotic factors are depends on abiotic factors for their regular life activities. So ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अहम चीज़ें, एंड वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स वेरी वेल। तो हमें क्या करना है कि बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स, इन दोनों के बारे में जान लेना है, तो हम लोग को इकोसिस्टम के बारे में पता चल जाएगा, ओके। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? सो पहले तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बायोटिक फैक्टर्स से, दूसरा है अबायोटिक फैक्टर्स, ओके। सो इसमें बायोटिक फैक्टर्स में व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स में हम लोग को दो तरह की चीज़ें दिखती है, केमिकल फैक्टर्स है कि फिजिकल फैक्टर्स है। सो केमिकल फैक्टर्स आर द केमिकल कंपाउंड्स, ओके, एंड द फिजिकल फैक्टर्स आर फिजिकल कंपाउंड्स। मीन्स देयर स्टेट कैन बी चेंज बट नेचर नेवर चेंज, ओके। दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स are known as physical factors. Like the water is there, nitrogen molecule is there, hydrogen molecule is there, oxygen molecule is there, water is there, soil is there, minerals are there, sunlight is there, okay. These are the physical factors. And the chemical factors, there are two groups, organic and inorganic. Inorganics, so nitrogen molecules है, hydrogen molecules है, oxygen molecules है, then ferrous है, then potassium है, sodium है, these metals, okay. And the molecules of oxygen, hydrogen, nitrogen, okay. ये सारे के सारे जो आते हैं inorganic है, okay. And the organics are proteins, carbohydrates and lipids. So these are the two groups, organic, inorganic factors, okay. तो ये हो गया हम लोग के अबायोटिक फैक्टर्स के। अबायोटिक फैक्टर्स में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। पहले तो फिजिकल केमिकल फैक्टर्स आते हैं, बाद में फिजिकल्स में कुछ नेम्स है, एंड द सनलाइट है, वाटर है, सो सम कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। जैसे कि ये सारे के फिजिकल है, ओके, ये सारी के सारी फिजिकल है, मतलब सो इनका नेचर, मतलब इनको लिक्विड, सॉलिड और गैस इन स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते, बट इनिशियल कंपोनेंट्स नेवर चेंज। तो ये फिजिकल है। एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फैक्टर्स, सो ये अबायोटिक है। बायोटिक फैक्टर्स में हम लोग के पास ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ये दो ग्रुप्स आते हैं। एंड ऑटोट्रॉपिक्स में खाली प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स, बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स, they can do the process of photosynthesis in which they can prepare their own food, and directly or indirectly the all living organisms except plants depends on plants for their food, okay. तो these are the autotrophic and the heterotrophic. इसमें आ जाते कंज्यूमर्स आ जाते, ओके, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये दो ग्रुप्स आ जाते।
कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स आते, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स आते, देन डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स आते हैं। इनमें बैक्टीरिया मोस्टली आ जाती है कि जो डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करती है और उसकी वापस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से, मतलब दे कैन कन्वर्ट दी डेड ऑर्गेनिजम्स into simplest components, and finally that components will mix with soil. Okay, so they helps to decompose the dead plants and animals, so that all the living organisms are known as microbes, especially bacteria. Okay, so ये जो ग्रुप्स बनते प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक डियर है, रैबिट्स है, जो कि प्लांट्स के ऊपर अपनी मतलब ज़रूरतें कंप्लीट करते, खाना मतलब उनका खाना प्लांट्स है, प्लांट्स के लीव्स है, ग्रास है। ओके, सो ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे जस्ट ईट द प्राइमरी कंज्यूमर्स and they complete their needs, and tertiary consumers they eat the secondary consumers. Okay, so this is the chain. Okay, this is the food chain. Okay, so how the biotic factors and abiotic factors are interrelated. देखते हैं कि पानी के बिना तो हम लोग जी नहीं सकते, तो पानी तो अबायोटिक फैक्टर है. ओके, so different type of foods we can grow with the help of water only, and that foods are very essential for our all डाइट और फूड. ओके, तो फूड ग्रेन्स है, राइस है, वीट है. ओके, जो भी है वो हम लोग पानी के माध्यम से और सॉइल के माध्यम से उनको क्या करते, प्रोड्यूस करते. तो अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स. ओके, नाउ जो भी अनाज जो बनाते हो तो बायोटिक में आ जाएगा फिर, बिकॉज दे आर लिविंग मतलब लिविंग है, मतलब प्लांट्स है, ग्रास ये सब लिविंग है. पर हम लोग को जो भी करना है वो अबायोटिक फैक्टर्स के बिना नहीं कर सकते. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके, दिस ऑल थिंग्स आर इंटर कनेक्टेड एंड दिस होल सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम. सो इसे हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम. ओके, तो स्मॉल इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया आपको इकोसिस्टम का, और बहुत ही ईजी है एक्चुअली. इट इज़ वेरी ईजी टू नो व्हाट इज़ द इकोसिस्टम, बट यू शुड रीड ऑल द concepts, what are the topics, what are the points which are given in this lesson, and you can increase your knowledge about the ecosystem. So simply we can classify okay ecosystems into two groups, abiotic factors, biotic factors. Components of an ecosystem, ये components है. फिजिकल इसमें एयर, वाटर, वेपर, मिनरल्स, सॉइल एंड सनलाइट. केमिकल में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस आ जाते. हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर द एयर मोलिक्यूल्स. ओके, दे आर इन द गैसियस स्टेट. कैल्शियम, फेरस, पोटेशियम, सोडियम. ओके, ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आ जाते हैं. बायोटिक फैक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. दीज आर द थ्री ग्रुप्स. सो प्रोड्यूसर्स आर ओनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक. एंड द कंज्यूमर्स एनिमल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, and decomposers microbes, and this group is known as heterotrophic. Okay, because these all animals or these all microbes are depends on the plants or dead bodies for their own needs or own food. Okay, that's why they are the heterotrophic. So ये दो group बनते. So this is the first point from this lesson, and now we'll discuss about the second point. Okay, so we'll discuss the next point of the ecosystem. You know that the ecosystem is the part of the biotic and abiotic factors. Okay, our ecosystem is made up of biotic and abiotic factors, whatever the present on the earth and everywhere on the land and aquatic region. Okay, so now when the animals or plants die, okay, their body is decomposed by microbes, and finally again it gets converted into soil and different type of inorganic and organic constituents by the microbes. Okay, तो ये सारी बन जाती है चीज़ें, और उसके बाद में जो भी आता है मतलब इकोसिस्टम. So ecosystem, you know that now we have discussed that already. The ecosystem, it is made up of biotic, abiotic factors, whatever the present on the earth. And now the same type of ecosystem is present
on the large scale of area. Okay, on the large area. Okay, vast region. Okay, vast region, and that is known as biomes. Okay, so that system, ecosystem. Okay, so that system is known as biomes. Okay, if the same type of ecosystem is present on the large areas, then it is known as biomes. And these biomes has two types. Okay, first is the land biome, second is the aquatic biome. Land means soil or land. Okay, plain region without water, that is land. And the aquatic biomes has two categories again. So in the first category, land biomes, there are two parts. Okay, one is the forest, green forest, evergreen forest. Second is a grassland ecosystem. First, grassland ecosystem and evergreen forest. So these are the two parts of the biomes on the land. And the second is the aquatic, it is a freshwater ecosystem, and second is a marine water ecosystem. Okay, so these are the types of the ecosystems. Now we know that the ecosystems means the presence of all living organisms as well as non-living organisms, and they are internally connected to each other for their all activities. Okay, without water we cannot exist, we cannot survive. So similarly, food we can cook with the help of water. So water is a biotic factor, but it is very essential for the biotic factors, biotic or living organisms. So every living organism is depends on the water, and so many things are possible because of the water and the sunlight. Without sunlight nothing can be happen. Okay, whatever the energy of sun, that is converted into food by the plants, and that will be converted into energy for the other animals. ओके, सो ये जो सारी चीज़ें कि एक दूसरे से रिलेटेड, इनको हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते. इनके बिना, एक चीज़ के बिना दूसरी चीज़ इनकम्प्लीट रहती है. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी एसेंशियल्स इन द केस ऑफ द इकोसिस्टम और इन द existence of the all living organisms. So some endangered species are also there, some like the Indian leopard is on the way of the extinction. Okay, कुछ एनिमल्स प्लांट्स है कि जिनकी क्वांटिटीज बहुत कम होती जा रही है, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट थिंग्स. ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट थिंग्स because whatever the activities carried by us, that activities will destroy the बैलेंस और इकोसिस्टम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम लोग की जो भी एक्टिविटीज़ है ह्यूमन बींग्स की, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफेक्ट्स करती है. सो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हम कंसिडर कर लेंगे. ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सो इट इज़ ओनली ग्रास इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके, लाइक द deserts are there. Deserts, there are no huge plants or big plants, but grass is present everywhere. That's why that ecosystem is known as a grassland ecosystems. So in that ecosystems also there are producers, then the primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. Okay, so some names of the plants, some names of the grass, and after that the producers, they are the producers, primary, secondary, tertiary consumers. That all chart is given in your lesson. You have to read that and you have to try to understand the main consumers and main producers, primary, secondary, tertiary. Okay, that all things are given there. We simply see the biomes. A specific ecosystem develops in a vast area called the biomes. Biomes has two types, the land biomes and the aquatic biomes. Grassland ecosystem is there, evergreen forest are there, aquatic ecosystem, freshwater ecosystem, marine ecosystems, and same ecosystems are present on the vast areas. Specific ecosystems are present on the vast area, and that ecosystems are known as the biomes. You have to remind this word biomes. Okay, bio means, मतलब इसका मीनिंग ये, बायोलॉजी मतलब जीव शास्त्र का, मतलब जिसमें जीव रहते हैं, जीवित प्राणी या वनस्पति का जिसमें भी समावेश होता है, उसको बायो बोलते हैं. तो बायोम्स, इन सारी के सारी चीज़ों से जो बायोम्स बनते हैं, मतलब जीवित है, मतलब है. ग्रासलैंड है, जीवित है. फॉरेस्ट है, जीवित है. मतलब ट्रीज आर द लिविंग थिंग्स. ओके, बट दे आर डिपेंड्स ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस.
Okay, that's why these are all these all systems, these all managements of the living beings and non-living beings is known as the ecosystem. इसलिए उन्हें ecosystem बोला जाता है. So we have to रिमाइंड, और हम लोग को ये याद रखना है कि इकोसिस्टम मतलब क्या है. कि जो इकोसिस्टम है जिसमें दोनों चीज़ों का बराबर का हिस्सा है तो ये चल सकती है. देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल टू लिव ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ और इन द इकोसिस्टम. कि एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है और दूसरे के बिना एक इनकम्प्लीट है. ओके, सो ये इकोसिस्टम्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एवरग्रीन फॉरेस्ट कि जिन्हें सदाहरित बोला जाता है. सदाहरित एक मराठी, इट इज़ अ मराठी वर्ड और आई थिंक इट इज़ इन हिंदी आल्सो. के हमेशा बहरने वाले, जैसे ग्रीन रहने वाले जो भी ट्रीज़ है, जो भी फॉरेस्ट है, उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है. पतझड़ के मौसम में पत्ते तो चले जाते, वापस आ जाते, हमेशा वो ग्रीन ही रहते मतलब. और उनका जो प्रोडक्शन सिस्टम है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद हेल्प ऑफ वाटर, carbon dioxide, they produce their own food by the process of the photosynthesis, and that system will be continue in that ecosystem. Okay, so grassland में ग्रास भी अपना प्रोडक्शन करती है और उसके ऊपर जो भी रहते हैं, जिराफ रहेंगे, गोट रहेंगे, बफेलोज रहेंगे, एलिफेंट्स रहेंगे, the animals which are the primary consumers, they directly depends for their all needs of food on the plants and the grass. Okay, वो उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी और उनके ऊपर उनका खाना, मतलब उनके ऊपर दे आर डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर फूड. ओके, फॉर देयर लाइफ और फॉर देयर ऑल एक्टिविटीज़. देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स लाइक टर्शरी कंज्यूमर्स. ओके, and all these are internally connected. Okay, now aquatic ecosystem, there are the freshwater ecosystem and a marine water ecosystem. So freshwater, you know that the freshwater is used for our all needs. Okay, we can drink only fresh water, we cannot drink the marine water or the salty water. Okay, because in the marine water there is large quantity of salts are present in the dissolved form and it is not suitable for the drinking purpose. So fresh water मतलब जो पानी रहता है वो थोडा फ्रेश, मतलब टोटली फ्रेश, मतलब इसको बोलते हैं मराठीत एक शब्द आहे गोड पाणी. ओके, आणि मरीनला बोलतात खारं पाणी. ओके, सो ये जो मीठा पानी बोलते हैं, इसको मीठा पानी हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं. कि जो सभी वनस्पतियों के लिए ज़रूरी है, सभी प्राणियों के लिए ज़रूरी है, सभी पशुओं के लिए ज़रूरी है, सभी पंछियों के लिए ज़रूरी है. मतलब हर तरह के बर्ड्स, एनिमल्स आर directly depends on that water for their particular needs. Okay, so that type of freshwater ecosystem, and whatever the animals which are living in the freshwater, they are the part of that freshwater ecosystem. And the marine water ecosystem, in the marine water, whatever the fishes or other type of animals or plants which are exist or present and they are depends on the on their on the marine water for their particular needs of the food. सो दैट सिस्टम इज़ द मरीन वाटर इकोसिस्टम. ओके, कि ये सारी की सारी, मतलब ये जो भी इकोसिस्टम्स है इंटरनली कनेक्टेड है एक दूसरे से. हम लोग को इसको समझ के लेना है. इसके अलावा इस लेसन में कुछ भी दिया नहीं. एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ गिवन इन दिस लेसन, दैट इज़ नथिंग बट ओके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मरीन. और इनके चार्ट्स दिए आपको पढ़ने, एक बार समझ के लेने. व्हाट आर द चार्ट्स मीन्स उसके अंदर क्या दिया है कि प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स. इंफॉर्मेशन इज गिवन, यू हैव टू रीड दैट एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड विच एनिमल्स, प्लांट्स आर देयर. ओके, विच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर देयर एंड हाउ दे आर इंटरनली कनेक्टेड एज द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जान लेनी है एक बार. सो लॉस ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस, कि इंसान जो है खुद गर्ज स्वभाव के लिए, खुद की नेसेसिटीज़ के लिए, खुद की ज़रूरतों के लिए हमेशा क्या करता है, एनवायरनमेंट का नुकसान कर ही देता है. नाउ द फर्स्ट इज़ व्हाट, द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. ओके, सो इस दुनिया की आबादी बढ़ती ही जा रही है, इंसानों की मतलब जो भी क्वांटिटी वो बढ़ती ही जा रही है, तो उनकी नीड्स बढ़ती जा रही है. एंड टू कंप्लीट ऑल दैट नीड्स पीपल स्टार्ट टू डू different type of changes in the ecosystem, and that directly or indirectly affects the ecosystem or disturb the balance of the ecosystem. मतलब
डिस्टर्ब का हो जाता है. सो फर्स्ट रीज़न विल बी इन द डिस्टर्बेंस ऑफ द इकोसिस्टम इज़ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, ये फर्स्ट रीज़न है. सेकेंड हमारे पास है अर्बनाइजेशन. मतलब अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि लोग, मतलब बिल्डिंग्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. गांव जो है उनका सिटीज़ में कन्वर्जन होता जा रहा है. एंड देर इज़ मोर कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द अर्बनाइजेशन और फॉर द बिल्डिंग्स purposes. And so that type of thing is urbanization, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या करती है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर ही देती है. मतलब इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है. एंड एवरी थिंग ऑफ द इकोसिस्टम इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेट्स अफेक्टेड बाय दीज ऑल चेंजेस. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ट्रैफिक. ओके, ट्रैफिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको पता है कि जो भी इंडस्ट्रीज है, जिनमें जो भी प्रोडक्शन है, उसमें से केमिकल्स लेट आउट से बाहर निकलते हैं, मतलब आउटलेट से बाहर निकलते, और वो बहुत सारी जो पानी की क्वांटिटी है जो हमारे ज़रूरतों को पूरी करती है, उनको क्या करते, दूषित कर देते. एंड जो भी चिमनीज रहती है उनमें से क्या होता है कि ऊपर के साइड से धुआं निकलता है. एंड दैट आर नथिंग बट द केमिकल्स, दैट ऑल आर द केमिकल्स. सम आर इन द gaseous form, some are in the liquids form. Okay, and that directly affects the ecosystem. Okay, and the traffic right now, the increase in the number of vehicles, private vehicles, and the population and the traffic, it also increases the quantity of carbon dioxide in the air, and it is the main reason for the global warming. You know that the carbon dioxide is one of the gas which trap the sunlight and does not allow to go back that. Okay, there is a reflection of sunlight, but it keep that sunlight in the particular region of that carbon dioxide. Okay, वो गैस ऐसा है कि जिसमें जो भी सनलाइट आती है वो उसी में रहती है, और इसकी वजह से जो भी अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ता जाता है. इट इज़ नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग. ओके, सो टूरिज़्म के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक ट्रीज़ लगाते हैं, स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं, और जो चीज़ें हम लोग को पसंद नहीं उनको काट देते हैं, निकाल देते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड द इकोसिस्टम. ये भी अफेक्ट कर देते टूरिज़्म. और टूरिज़्म पोल्यूशन बढ़ाते, कचरा फेंक देते, प्लास्टिक्स एटसेट्रा इज़ यूज बाय दी people who are going to visit different type of places in the world, and that is also one of the reason for the disturbance of ecosystem, because we should not care about the ecosystem. हम लोग को केयर करनी चाहिए इकोसिस्टम की, लेकिन हम लोग करते नहीं, और हम लोग को हमारी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. Then the large dams, to build the large dams we just cut so many trees and we just dig so many area of the land, and it also affects द इको सिस्टम. इनमें से हम लोग फॉरेस्ट को भी कट कर देते ताकि हम लोग की पानी की ज़रूरतें कंप्लीट हो जाए. पर हम ये नहीं सोचते कि हम जब ये सब बनाते हैं तो उसमें जो भी इकोसिस्टम में जो भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका क्या होगा. सो ऑब्वियसली वी आर डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम. एंड देन द wars. Okay, first world war and second world war, you know that about these two wars. Still there are some memories of these wars, okay, present on the Hiroshima and Nagasaki in the जापान. ओके, कि जहाँ पे क्या क्या किया था कि अणु बॉम्ब डाले गए थे, मतलब एटॉमिक बॉम्ब्स. तो आपको पता है एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा था कि वहाँ के सारे ट्रीज एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन दो ह्यूमन बींग्स मर गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. और वहाँ की ज़मीन जो थी बंजर बन गई थी, वहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं ले सकते थे, इस तरह उसकी हालत थी. तो ये सारे मतलब very bad effects on the ecosystems, and these all bad effects are carried by us only. Okay, हम लोगों ने ये सारे के सारे इफेक्ट्स क्या किए कि इकोसिस्टम में मतलब बदलाव लाए, हम लोगों ने लाए. मतलब we are responsible for the disturbance of the ecosystem. Finally I can say that we are disturbing ecosystems, and we should take care of the ecosystem, because ecosystem is part of our life also. Okay, हमारी ज़िंदगी का भी एक पार्ट है. So these are the points which are given in the lesson ecosystems. And if you like this video, don't forget to like, subscribe and share my
channel and share my videos, and keep watching. Thanks for watching. In the next video we will discuss about the exercise of this lesson, ecosystem.